मैंने ज्वाइन कर लिया सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सर ये शिष्यवृत्ति तो क्या है? ये आपके धन्यवाद। मैं हमारे वाइस चांसलर महोदय डॉक्टर उपेंद्र धर सर और धर मैडम से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के स्पीकर सर महेंद्र सिंह सर का स्वागत करें पुष्प गुच्छों से वर्चुअल रूप से। टेक्निकल टीम प्लीज। मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चेयरपर्सन डॉक्टर संतोष धर मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो सेंटर के बारे में जानकारी दें। धर मैडम प्लीज। Thank you. Esteemed resource person of today's webinar, Shri Mahendra Singh Solanki, Deputy Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh, Honorable Vice Chancellor of the University, Dr. Upinder Dhar, HOIs and HODs of constituent institutions of Shri Vaishno Vidyapith Vishwavidyalaya, Member Secretary and Event Coordinator, Dr. Namrata Jain, all members of the center, colleagues, and my dear students. It was in the year 2019, the Center of Excellence in Sustainable Development was established with a vision to contribute towards three pillars of sustainability: people, planet, and prosperity. And it is after 5 years, although the center does not claim bigger achievements, but yes, we have taken several steps and moved a few steps ahead for furthering this cause. We are happy to share the little steps that contributed towards different sustainable development goals. The first initiative taken by the center was Sustainable Development Goal 12. Unsustainable patterns of consumption and production are the root cause of triple planetary crisis: climate change, biodiversity loss, and pollution. One of the targets of SDG 12 is environmentally sound management of waste. Electronic waste is a global concern. In order to take the initiative for proper disposal of e-waste, the center has disposed 2.2 tons of electronic waste of the university with a registered company of electronic waste rather than with a scrap dealer. The center then celebrated Swachhta Pakhwada as per the guidelines of the University Grants Commission. This was the longest celebration spread over 17 days, where a number of Swachhta and environment-related activities were undertaken to cover SDGs such as SDG 12, responsible consumption and production, SDG 13, climate action, SDG 14, life below water, and SDG 15, life on land, through activities such as campus and hostel cleanliness drive,
plantation of saplings, awareness raising about solar panels, weeding out old and unimportant papers, poster making competitions on environment conservation, speed competition on water conservation, slogan competition on forest conservation, and best out of the waste competition. Students of the university performed Nukkad Natak for school-going students in the nearby villages with the objective to raise awareness among the young ones to minimize the use of single-use plastics and the need for cleanliness and hygiene. The center also organized a special talk on air pollution, its impact and control strategies. SDG 6, clean water and sanitation, demands attention as billions of people still lack safe water and adequate sanitation facilities. In order to raise awareness about the need of ensuring the availability and the sustainable management of water and sanitation for all, a webinar on SDG 6 was organized by the center. Goal 17, partnerships for the goal, lays significance of partnership and collaboration. Keeping this in view, the center, in collaboration with the National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, conducted a 3-day online training program that was attended by more than 600 participants across the country. The center is glad to share that in collaboration with the Rotary Club, the center planted 100 saplings in Jhabua. Honorable Vice Chancellor of the university, along with the chairperson of the center, visited the tribal area near Jhabua and participated in the plantation drive. Then, in collaboration with Indore Municipal Corporation, an awareness campaign on #BagYourReusable was coordinated by the center to raise mass awareness about the hazards of plastics and to encourage people to carry and use possible eco-friendly alternatives such as steel glasses, spoons, and bottles. Life on land is an integral part of our survival. We collaborated with Isha Foundation to sensitize students towards the need for soil conservation for SDG 15, Life on Land. Every year, the center, in association with Jimmy and Janak McGilligan Foundation for Sustainable Development, celebrates Jimmy Memorial Week for Sustainable Development so that the youth can understand the importance of SDG 7, affordable and clean energy. Moreover, to give them practical exposure, the center planned a visit to the center where students witness the applications of renewable energy, solar energy. SDG 9 talks about industry innovation infrastructure. The center organized Bridge-O Innovation competition wherein students constructed bridges using popsicle sticks. The idea was to give a platform to students to show their talent and to groom their skills so that in future they can contribute towards creating sustainable infrastructure and foster innovation by building resilient infrastructures. Single-use plastics have created havoc all around the world. University makes every effort to minimize the use of single-use plastic. The center has initiated the awareness drive, Say No to Single Plastics, and tries to minimize the use of plastics during events in the university. Now, good health, SDG 3, good health and well-being, aspires to ensure healthy lives and promote well-being for all. The COVID-19 pandemic hindered the progress in achievement of SDG 3. Keeping this in mind, the center organized webinar on biomedical waste management and on ecosystem restoration for good health and well-being. The center celebrates prominent dates such as World Environment Day, International Day of Forests, Earth Day, Ozone Day, and encourages students to participate in different activities organized at state and national level. We are delighted to share that two of our students, Khushi Prajapat and Ayushi Jain, participated and won in national level competitions organized by IIM Vizag, the Business School Visakhapatnam, on the occasion of International Ozone Day in the month of September 2021. Agriculture plays an important role in addressing the needs of the growing population and to meet the targets of SDG 2, Zero Hunger. In order to make students conscious towards it, a session was organized on the importance of native seeds in sustainable agriculture. Sundarlal Bahuguna, a renowned Indian environmentalist, a man
who taught Indians to hug trees, shall always be remembered as the man of the earth, to spread his spirit and compassion towards nature, to live in harmony with nature, and to impart a message of simplicity. The center organizes Sundarlal Bogna Memorial Oration by Padma awardees every year. Padma Bhushan Dr. Anil Prakash Joshi, Padma Shri Shri Shyam Sundar Paliwal, Padma Shri Mahesh Sharma, Dr. Rajendra Singh, the Waterman of India, delivered the oration in last few years. Since its inception from 2019, Center was graced by 26 guests at different occasions. Around 36 activities were conducted that witnessed the participation of around 3,000 participants. 227 students have participated in National Students Paryavaran Competition, an initiative of Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the aegis of Paryavaran Sansakshana Gatividhi during July-August 2023. Recently, 13 students from university have registered for Green Olympiad for Youth. This Olympiad is implemented by the Energy and Resources Institute and is endorsed by the University Grants Commission, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Environment, Government of India. To teach, to preach, to practice, to live in harmony with nature is not one day or 1 year exercise. Continuity, consistency, consciousness, civic sense, and collective actions are principal components of sustainable life. We hope to continue the journey with more actions, more zeal in the coming years. With these words, I once again welcome our guest, Shri Mahendra Singh Solanki. I'm certain that today's session on forest and innovation would definitely turn out to be fruitful for everyone present over here. With these words, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपके वक्तव्य को सुन के ऐसा ही लगा कि सेंटर ने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मदद की, पर्यावरण संरक्षण और हर पहलू को छुआ है और उपलब्धियां भी बहुत सारी है, बहुत सारे मोती हैं उपलब्धियों के इस सेंटर की झोली में। और हम लोगों ने कोशिश की है कि कुछ मोतियों को चुन के एक माला बनाई जाए, मतलब एक वीडियो भी बनाया है सेंटर की उपलब्धियों पे। तो मैं अब टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो बताएं।
थैंक यू टेक्निकल टीम। मैं हमारे वाइस चांसलर सर डॉक्टर उपेंद्र धर सर से अनुरोध करूंगा कि वो मैं आशीर्वचन दें इस अवसर पे। सर, आज के हमारे अतिथि श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी, सभी डायरेक्टर्स, डीन्स, फैकल्टी कलीग्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हर वर्ष मार्च के 21 तारीख को ये दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, which is dedicated to raising awareness about the immense importance of forests for our planet and its inhabitants. This year's celebration holds particular significance as we grapple with the ever-growing challenges of climate change and biodiversity loss. Forests play a critical role in mitigating these issues, acting as vital carbon sinks that absorb greenhouse gases and harbor an incredible diversity of life. Forests and innovation. New solutions for a better world is the chosen theme for World Forestry Day 2024 by the Collaborative Partnership on Forests, CPF. This theme underscores the crucial relationship between forests and innovation, highlighting their reciprocal roles in shaping a better world. The history of World Forestry Day, also known as the International Day of Forests, dates back to 1971, when Food and Agriculture Organization, FAO, of the United Nations established it during the 21st session of the FAO conference. The primary objective of World Forestry Day is to raise awareness about the importance of forests and trees, promote sustainable forest management practices, and highlight the various contributions of forests to the environment, economy, and society. Over the years, World Forestry Day has become a global platform for governments, organizations, communities, and individuals to come together to address forest-related issues, advocate for conservation efforts, and discuss innovative approaches to forest management and protection. Forests and innovation, new solutions for a better world, is perhaps deliberately provocative. The forest sector is not widely seen as one of the world's most innovative area. That is perhaps the reason why this has been coined. Indeed, there is a perception among the people, in fact, perception about meaning, that it is instead rather conservative and opaque. Some people think like that the forest or the forestry is more conservative in nature and opaque. There may not be innovations there. That is why, to draw attention of the people, this theme, forests and innovation, has been chosen for 2024. It is time for
that perception to be updated, and for governments, funders, and investors to rally behind the array of innovations that hold potential to create positive change in the world. In fact, particularly in this sector, and contribute to many other sectors too. Our lives literally depend on forests. So forests are so important, which everyone must realize, that our lives literally depend on forests. There is no escaping the rapidly changing context and worst impacts of the climate, flood, and biodiversity crisis without successfully adapting and innovating to better protect, restore, and manage the planet's forests. So what do we mean by innovation in this context? Well, it is not just about new technologies. It's also about new policies, institutions, and forms of governance. And there are three main types of innovations to consider: incremental, transformative, and disruptive changes. Incremental innovation has to do with adding attributes to existing products, developing more efficient processes, and or expanding into new markets. It is relatively easy to plan and forecast. It is often the result. It is often the result. Incremental innovation is the result of improved processes or market knowledge, and is generally a linear process. In the forestry sector, this includes things like reduced impact logging, increased awareness of keeping high carbon stock, or high conservation value forests intact, better breeding to make plantation forestry more productive and sustainable, and precision forestry, which uses advanced technologies to improve forest management results. These are examples of incremental innovation in forestry sector. Transformative innovation leads to new products, novel value chains, or new ways of doing business, creating new socio-economic trade-offs. And disruptive innovation occurs when a transformative innovation is so radical that it displaces existing established actors of well-known technologies. These later types of innovation, unlike their incremental counterpart, are not linear. See, incremental innovations are linear, whereas transformative innovations are not linear. They progress by leaps and bounds, and their ultimate outcomes cannot fully be known to advance. So, so far as the transformative innovations are concerned, they replace certain processes which were earlier being practiced. With regards to forestry, transformative innovation often comes from other sectors and requires more time and effort to be adopted and tailored for specific forestry relevant uses. It also requires the congruence of several conditions: versatility of the innovation. For instance, can it be used outside of the realm it was initially created for? The existence of the technology and or enabling environment to expand the use of the innovation.
and strong, yet unknown, demand for the products of this innovation. The latter being the condition for transformative innovation to become disruptive. So when we talk about transformative innovation, it is disruptive in nature. As I said, it may replace something which was practiced earlier. Whereas in the incremental transformation, that doesn't happen. That is a linear. Incrementally change happens in the case of incremental innovation. Whereas in transformative innovation, there may be altogether change. Where there may be impact of other sectors on forest, say technology. Right now, there are more examples of ongoing potentially disruptive innovation in the forestry sector than many people realize. For instance, biotechnology advances are being used to tailor trees in plantations, such as by reducing the amount of lignin in wood to improve pulp yield or increasing it to produce biomass for energy, and increasing the amount of cellulose derived sugars for bioplastics or biofuels. These are the examples of transformative innovation. Machine. So in fact, machine learning is being used to identify wildlife species in camera traps much faster and more cheaply than manual methods, and to predict animal and poacher behaviors in national parks, and drones equipped with advanced sensors. For example, LIDAR, LIDAR, that is the acronym, are being put to purposes such as management surveys, fire detection, and illegal logging reporting, with huge potential to save costs and protect resources. These are again examples of transformative environment where other sectors get in for the benefit of the forests. Meanwhile, rethinking forest, plantation, and tree product ownership and stewardship by individuals and communities, rather than following classic industries concession ownership, is proving significant for the expansion of tree cover, including agroforestry, into private and community land, to better value tree products, including non-timber forest products, fostering diversification and better livelihoods for the rural dwellers. Policy moves like India's to give farmers the right to use the products of trees previously pertaining to the state, that is creating a key incentive to take care of such trees. And say if we take the example of a country like Peru, to formalize smallholder timber production on agricultural fallows, have the potential, if effectively translated into practice, to make a huge change to livelihoods and the environment. Innovation can indeed occur at the end of the pen of forest legislators. Point is, farmers can be involved, dwellers, those who live around forests or near forests can be involved in protecting the forests by incentivizing them with the products of the forest meaningfully and legally.
The previous examples are already in use in some places and have potential for wider adoption to make more significant impact. Other innovations have even higher potential for transformation and disruption, but are yet to be applied at a meaningful scale with this sector, and often require the existence of a given technology and an associated platform. They have the potential to completely change the job of the forester of tomorrow. So innovations can be so significant that they can even change the job of the forester of tomorrow, the future forester. What is digitalization? Say drones equipped with new sensors, combined with more and more accessible and accurate satellite data, and supported by increasingly affordable data storage, distributed calculation capacities, artificial intelligence-driven analysis, and virtual reality will enable us to manage forests and plantations with the real-time data, combining information across different scales on the health and productivity of forest stands, ecosystem services, and more. Even blockchain and other fintech developments supported by mobile applications also have immense potential in securing land rights and transactions and increasing transparency in forestry-based operations, despite being created for a very different purpose. Yet, innovation alone will not serve us. We also need to get the most basic things right for the benefits of incremental, transformative, and disruptive innovation to be fully and fairly realized. We need forests, plantations, and trees to be managed by well-trained people who can make a decent living by sustainably managing the resources. We need to also ensure that these innovations benefit just the innovator. These innovations benefit not just the innovator, but first and foremost, the communities and actors that will use these innovations. So with these words, while setting the ball rolling, I'm sure that this webinar is a part of the webinar series initiated by the Center of Excellence for Sustainable Development. It will be very useful and meaningful. And we have a very appropriate expert with us today who specializes in forestry. And we can take it granted that with his background, with his experience, with his expertise, will be better understanding and having more clear picture about the forests in our country, how they are being protected, how innovations are happening, how far we are now using, say, as I mentioned, drones are being used in certain countries. Drones are we doing it in our country also to even detect poaching, or if there is anyone doing any kind of loss to the trees? How far technology, which falls under transformative innovation, that means when we are taking the advantage of the other sectors, say technology is being applied to make our system better equipped
So I once again join all members of this center to welcome our guest, Mr. Mahendra Singh Solanki ji, on this very important occasion. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your excellent and knowledgeable lecture. हम लोगों को वनों की सुरक्षा करना है, वनों को कंजर्व भी करना है और नए नए प्लांटेशन भी करना है, क्योंकि वन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक हैं, हमको बहुत कुछ देते हैं और प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि अभी तक प्रकृति से खिलवाड़ किया और जब प्रकृति ने हमसे खिलवाड़ करना शुरू किया तो उत्तराखंड और बहुत सी जगह अपन ने उसके परिणाम देखे हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर लेक्चर। अब मैं श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी की जो यात्रा रही, जो सर ने मुझे भेजा है पूरा अपना जीवन परिचय, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। सर के जो यात्रा की शुरुआत हुई थी खरगोन जिले की राजपुर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र से, और सर ने आज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तक की यात्रा तय की है। तो उस यात्रा के वृत्तांत के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी का जन्म खरगोन जिले के राजपुर तहसील में वर्ष 1965 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में हुई। वे एक किसान परिवार से हैं। उन्होंने 11वीं तक की शिक्षा खरगोन शहर से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने अपने बीएससी एग्रीकल्चर की जो डिग्री है वो कृषि महाविद्यालय इंदौर से सन 1986-87 में हासिल की। उसके बाद पहली पोस्टिंग उनकी इंदौर में ही हुई और उद्यान विस्तार अधिकारी के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद कृषि विकास अधिकारी के पद पर बुरहानपुर में सेवाएं दी। सन 1990-91 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से राज्य वन सेवा में रेंजर पद पर महेंद्र सर का चयन हुआ। उसके बाद उन्होंने रेंजर पद के हैसियत से सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, अब्दुल्लागंज आदि में रेंजर के पद पर काम किया और इस दौरान उन्होंने वनों के संवर्धन और सुरक्षा पर कार्य किया। वर्ष 2008 में प्रमोशन प्राप्त कर वे ओपन मंडल अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए और उक्त जिलों में पुनः सेवा का उन्हें अवसर मिला। वर्ष 2020-21 में भारतीय वन सेवा में वन मंडल अधिकारी के रूप में वन विकास निगम बैतूल एवं छिंदवाड़ा में सेवाएं दी। उसके बाद माह अक्टूबर 2023 में इंदौर शहर मालवा की नगरी में सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी इच्छा है कि सर्विस के अंतिम पड़ाव पर यदि ईश्वर की कृपा रही एवं आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इंदौर शहर से ही सेवानिवृत्ति वो लेंगे। उनकी जो हैबिट्स है उसमें साइकिलिंग करना, वनों में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता के आधार पर रोपण करवाना, वन क्षेत्र में निवास कर रहे गरीब लोगों को सुरक्षा देना और वनों से प्राप्त होने वाले लाभ और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना आदि हैं। इंदौर शहर में आने के बाद नवरत्न बाग वन विभाग कॉलोनी में उन्होंने और उनके साथियों ने आपसी सहयोग से लगभग 25,000 पौधों की नर्सरी तैयार की है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के औषधि पौधों को तैयार किया जा रहा है। तैयार होने के बाद माह जुलाई से इच्छुक संस्थाओं को निःशुल्क पौधे का वितरण वो करेंगे और उसके साथ साथ उन पौधों के संरक्षण आदि का प्रशिक्षण भी निःशुल्क उनकी तरफ से दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अब मैं महेंद्र सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। महेंद्र सिंह सर, प्लीज। वेबिनार से जुड़े सम्मानीय सदस्य को मेरा नमस्कार। आज
चूंकि आपकी संस्था ने मुझे आप लोगों के साथ जोड़ा, मैंने अभी पूर्व प्रवक्ताओं ने जो बहुत सारा अपने विचार प्रकट किए, मैं मेरा अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा। चूंकि मैं 91-93 से इस फॉरेस्ट विभाग में हूँ। साहब ने भी बोला, भी धर साहब ने बोला, मैडम धर ने बोला, ये आज की हर व्यक्ति के लिए नहीं, हर इंसान की आवश्यकता हो गई कि हमें पौधों का रोपण करेंगे तभी हम आगे सर्वाइवल हो पाएंगे, आगे रह पाएंगे। एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई। ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में आज हम पर्यावरण वानिकी विश्व वानिकी दिवस मना रहे हैं। हम दिवस तो हर तरह के मनाते हैं, लेकिन पौधा रोपण करना, फिर उसको सुरक्षित रखना और उसको पेड़ का स्वरूप देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। मेरे सर्विस काल में मैंने कई ऐसे प्लांटेशन सक्सेसफुल करवाए, वो स्वयं के एफर्ट्स से भी है और खुद के इंटरेस्ट से है। मैं आपकी संस्था से जुड़े सारे सदस्यों से, सारे बच्चों से ये निवेदन करना चाहूंगे, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से भी होंगे, शहरी क्षेत्र से भी होंगे, आज इस दिवस में हम ये प्रण करें कि कहीं ना कहीं हम एक पौधा लगाएं, उसको सुरक्षित रखें और उसे ये इस उद्देश्य से लगाएं, हम नहीं उपयोग करें तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी तो उसका उपयोग कर पाए। आप लोगों ने सारी चीजें तो बहुत सारी चीजें बता दी, वनों के बारे में क्या करना चाहिए। फॉरेस्ट विभाग नए नए इनोवेशन कर रहा है। इसमें अभी हम फायर अलर्ट सिस्टम जो हमारे यहाँ जो लागू हुआ है, तो कम से कम इस पे जो हमारे जंगलों में अंधाधुंध जो फायर लगती थी, उसकी काफी तरह से हम लोग रोकथाम कर पा रहे हैं। और प्लांटेशन में भी बहुत सारे हम नई नई प्रजातियों को ला रहे हैं, फास्ट ग्रोइंग। जो फास्ट ग्रोइंग प्रजाति लाएंगे, सो आपके किसान भाई लोग भी लगाएंगे उसको, ताकि वनों पे कम से कम उसका दबाव पड़े। जंगल को बचाने का दायित्व वन विभाग का है। वन विभाग कितनी यूनिक, कितनी स्ट्रेंथ है वहां तक तो ठीक है, लेकिन हम हर इंसान का एक दायित्व है कि वो वनों की सुरक्षा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो जुड़े। आंकड़े तो बहुत सारे हैं, आंकड़ा बताने की बातें तो सब आजकल हमारे जो गूगल वावा है सब बता देते हैं। हमारे जो इंदौर शहर में इतना डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ने से ये स्थिति आ गई कि हम ने भवनों के, मल्टियों के जंगल खड़े कर लिए। ये सब आप और हम सब जानते हैं। तो अब हमारा दायित्व पुनः उसी ओर जाने का हो गया है कि हम हर व्यक्ति, हर इंसान कम से कम पौधे लगाने का प्रयास करें। साहब ने जो मेरे बारे में वर्णन किया, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और हर आदमी को पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, चाहे निजी संस्थाएं हो, चाहे गवर्नमेंट संस्थाएं तो कर ही रही है, लेकिन हर आदमी को इसके आगे साथ जुड़ना पड़ेगा। इंदौर शहर में हमारे पास 4 रेंजे हैं। 4 रेंजों में अलग अलग प्लांटेशन भी होते हैं। हमारा एरिया इतना ड्राई एरिया है, तो जितने भी प्लांटेशन लगते हैं उसका सर्वाइवल मतलब इतना नहीं हो पाता है। वो हमें उस और भी हम लोग प्रयास रहते हैं कि वही स्पीसीज का उपयोग करें जो यहाँ की लोकल स्पीसीज है। अभी हम बात करें मिशन लाइफ की, इसी से जुड़ा हुआ एक है, अब सभी लोग जानते हैं, जिसके 7 बिंदु है: ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना करें, टिकाऊ सतत खाद्य प्रणालियों का अपनाना और गैस अपशिष्ट को कम करना, ई वेस्ट को कम करना, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। ये जो 7 बिंदु है जो हर आदमी जानता है, इसको अगर हम अभी से एडॉप्ट कर लें तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी बात, अगर हम बात करें ऊर्जा की बचत, तो हम आज कॉलेज या कोई भी संस्था में, हमारी संस्था है, वहां पे लाइट चल रही है, बटन दबाने का प्रयास हम अपने खुद से ही प्रयास करें। हम किसी का ये नहीं करें कि वो आके हमारा सर्वेंट बटन ऑफ करे, हम खुद कर दें। अगर हर आदमी ये चाहने लग जाए तो ऊर्जा की बचत होगी, तो हमारा बहुत सारी चीजें
आगे की बचत होती जाएगी। एलईडी बल्ब का उपयोग करें, ये तो फिर आप सब सार्वजनिक जानते हैं। पानी की बचत, अब पानी की बचत का अभी अभी आने वाला, अभी 2-4 दिन में रंग पंचमी आ रही है, धुलंडी आ रही है, तो हम क्यों न गुलाल का उपयोग करें, क्यों इतने कलरों का उपयोग करें, क्यों पानी का वेस्टेज कर रहे हैं हम। तो इस ओर भी हमें आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को सोचना है, प्रचार प्रसार करना है। इसमें क्या है कि अभी हम हाई प्रोडक्टिविटी वाली जो फसलें ले रहे हैं, जैसे गेहूं की फसल ले रहे हैं, गन्ने की फसल ले रहे हैं, उसकी जगह अगर हम पुराने जो बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, मक्का लें, तो कम से कम पानी में आपकी फसलें होगी। पानी को बचत हम कैसे कर पाए, हम वाटर स्टोरिंग स्ट्रक्चर तैयार करें, चेक डैम बनाए, कंटूर बनाए, कुछ बनाए, कम से कम मतलब उस पानी को वापस रिचार्ज करें, तभी हम पानी की बचत कर पाएंगे। आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था, कई शहरों में, जो बड़े बड़े शहर है जो हमारे, उन शहरों में पानी की समस्या आ रही है। ऐसा नहीं हो कि एक समय ऐसा है हमारे इंदौर शहर में भी पानी की समस्या है, तो उसको भी हम उसकी बचत के लिए, जैसे हम सेविंग करते हैं, उसी प्रकार हमें हर व्यक्ति को कहीं न कहीं पानी की बचत करने के लिए कुछ न कुछ उसमें योगदान देना पड़ेगा। टिकाऊ सतत खाद्य प्रणाली को अपनाना, मौसमी भोजन का उपयोग करना, आज हमारा एक कल्चर बन गया नए बच्चों का, पर्टिकुलर चूंकि हम जितने भी इस वेबिनार से जुड़े हैं सभी एजेड लोग हैं। आज हमारे बच्चे फटाक से लगाए, स्विगी का ऑर्डर के आ जाओ, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। पिज्जा बर्गर खाने से शरीर, हेल्थ, स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा। आपको मौसमी भोजन, जो आपको बरसात में जो भोजन मिलता है वो खाइए, गर्मी में जो खाना खाइए। तो हर सीजन का भोजन हमारे इंडिया में, हमारे मध्य प्रदेश में तो हर मौसम का भोजन उपलब्ध है। तो इस चीज की ओर भी हमारे बच्चों को जाना चाहिए। ई वेस्ट, आजकल ई वेस्ट के मामले में हम देखें तो हर आदमी के पास इतना हो गया है कि ये साल भर 6 महीने में लैपटॉप को फेंक दिया, मोबाइल को फेंक दिया। ये ई वेस्ट जो है उसको कम करने के लिए हम कम से कम इनका उपयोग करें, कम से कम इनको सुरक्षित रखें, अधिक से अधिक समय तक उपयोग करें। तो ये भी एक हमारा पर्यावरण के प्रति योगदान रहेगा। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, अब स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए तो हम फिर वही बात करेंगे कि उसी ओर जाएंगे। ग्रीन क्लब जैसे आपके यहाँ बना है, हर जगह बना है, हर संस्था में बने, हर बच्चा जहाँ गांव में जाए वहां कुछ न कुछ करे, तभी हम स्वस्थ जीवन, जब आपके पास जंगल रहेगा, वन रहेंगे, तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो मैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, मैंने जो आप साहब ने, मैं दुबे साहब ने बताया कि पौधे तैयार करें, मैं आपकी संस्था पर विजिट करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम वहाँ आपके यहाँ कुछ पौधे लगाऊंगा। आपने आज मुझे वेबिनार में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप मुझे आपकी संस्था में या कहीं भी आमंत्रित करेंगे, मैं आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर। और हम तो पहले भी वन विभाग से काफ़ी पौधे ले चुके हैं और लगा भी चुके हैं। और ये सेंटर का भी ये उद्देश्य है अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, अपने कैंपस को ग्रीन कैंपस बनाएं। तो आपकी सब नर्सरी से भी हम ला चुके हैं पौधे, और अभी औषधि पौधे आपने कहा, तो एक औषधि उद्यान भी यहाँ तैयार करने की योजना सर से बात करके करेंगे। और आपसे सहयोग मिलता रहेगा, और आप फिजिकली भी विजिट करें सर यूनिवर्सिटी को। और हमारे यहाँ एक गुलाब का भी उद्यान अच्छा बड़ा बना हुआ है, और पिछले वर्षों में मालव रोज सोसाइटी की तरफ से कंपटीशन आयोजित की गई थी, उसमें एक नहीं 3 पुरस्कार जीते हैं हमारे यहाँ के गुलाब। थैंक यू, बधाई बधाई सर। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। आई इनवाइट द ऑडियंस फॉर एनी क्वेश्चंस। सर एक चीज और बता दूं, आपने कहा कि सब बुजुर्ग लोग ही दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। 100 से अधिक विद्यार्थी भी इसको अटेंड कर रहे हैं सर। स्टूडेंट के लिए बोला सर मैंने, वेबिनार ऐसा को नहीं है सर, 100 से अधिक विद्यार्थी भी अटेंड कर रहे हैं। जी 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 जी। एनी क्वेश्चन सर? मैं, ठीक है सर, अभी तो नहीं, फिर हम आपको, नहीं तो क्वेश्चन कुछ होंगे तो आपको मेल पे भेज देंगे या पर्सनली सर सर बात सर करके। सर जी सर सर।
मेरी सर थोड़ा सा आपको साथ छोड़ना चाहूंगा, मेरे कल वर्कशॉप है, जी तो उसमें व्यवस्था जमाना सर मुझे। जी ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर सर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपसे थैंक यू मुलाकात होगी थैंक यू सर, सर। बहुत थैंक Thank यू you, सर, sir. आइएगा, धन्यवाद। आपके यू आर आपके इनवाइटेड इन करीब यूनिवर्सिटी सर। सर थैंक यू। सर 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 Thank you ओपी so much. चौधरी को, ओपी चौधरी को जानते हैं आप? हाँ सर, जानता हूँ ना सर। उन्होंने पीएचडी मेरे साथ ही की थी। सर 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 आपसे मुलाकात होती सर, फिर चर्चा होगी सर। जरूर जी सर जरूर। सर, ओके सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर। अब मैं डॉक्टर नम्रता जैन मैडम से आग्रह करूंगा कि वो वर्ड ऑफ थैंक्स दें सर को और सभी लोग। मैडम प्लीज। सेंटर आभारी है श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी का, जिन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बावजूद सेंटर को समय दिया। सेंटर आभारी है परम श्रद्धेय माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर उपेंद्र जी धर का, एवं सेंटर की अध्यक्ष डॉक्टर संतोष धर, एवं सेंटर के सभी मेंबर्स का, जिनके सतत मार्गदर्शन और इंस्पिरेशन ने सेंटर को यथासंभव अपना योगदान देने के लिए निरंतर कार्यरत रखा है। सेंटर सभी हेड्स का धन्यवाद देता है, सेंटर के सभी मेंबर्स जिनके कोऑपरेशन के बिना इस तरह के वेबिनार्स संभव नहीं है। So a very big thanks to all the faculty members and students for making this webinar successful. Thank you everyone. Thank you, madam. Now I request all to please rise for national anthem, and team member I request to run the national anthem. Thank you. Thank you, sir. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Thank you, sir. Thank you all. Thank you, madam. Thank Namaskar. you. Thank ठीक you. है, अब एग्जिट